Good morning everyone. Today we are going to study product of sum and difference of two terms. Means if we have to find the sum or difference of two terms, then the formula is, suppose a plus b and a minus b. Means this a will be same in both the terms and b will also be same in both the terms. Then a plus b, and these are in multiplication, means first term into second term minus second term into fourth term. Then it will be a square minus b square. Let us see the proof of how it comes a square minus b square. Means we have to multiply the first term of a with the whole bracket of second term, means a minus b. Then plus b की multiply होगी again in the bracket, whole bracket a minus b. Then a into a, it will be a square minus, because here it is minus sign, into a b, plus again ba means ab, plus minus minus b square. So then a plus ka ab and minus ab will be cancel. Then what is left? A square minus b square. So our next identity, means next formula, is a plus b, a minus b is a square minus b square. Got it? Now let us see the examples. Y plus 9 and y minus 9. The formula is a plus b and a minus b. So we have to only put the values of a and b. So a is a, what is a? A is y. Y का square minus b is 9. 9 का square. Then y square minus 9 का square is 81. Then answer is y square minus 81. Now see the next example. If the units are in fraction, 3 upon 5p plus 1 upon 3, 3 upon 5p minus 1 upon 3. Again we have to put the identity a plus b, a minus b. Then it will be 3 upon 5 p का whole square. Okay, the square will be of this whole 3 upon 5p minus 1 upon 3 का whole square. So it will be 3 3s are 9 and 5 5s are 25, and it will be p square minus 1 upon 9. So the identity is 9 upon 25 p square minus 1 upon 9. Okay. Now see the next example. If the a and b already are in squares, then we have to do the just square of these units only. So it will be 6 square minus 7y square and 6x square plus 7y square. Okay, अगर माइनस पहले है तो नो प्रॉब्लम, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई, सो इट विल कम माइनस ओनली. ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज वी हैव टू डू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 7y स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा. ओके, देन 6 का स्क्वायर विल बी 36 एंड x का स्क्वायर विल बी 2 2s are 4, x raised to the power 4. All right, minus 7 into 7 means 7 का स्क्वायर will be 49 and y का स्क्वायर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर, it will be y raised to the power 4. Okay, now see the next example. M minus 2n and 2m plus 4n. So m minus 2n, the terms are different, both the terms are different. So what we will do, we will make the terms same. Can you see m minus 2n and here 2 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है. अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, if we will take 2 common, then the answer will become in just like this way. Okay, so m minus 2n, and if we will take 2 common from this portion only, so it will become m plus 2n. Okay, so m minus 2n and m plus 2n, same identity हो गई. So this 2 we will take common and it will be m minus 2n and m plus 2n. Now we can easily make apply the identity. Okay, m square minus 2n square means m का square minus 2n का whole square. So it will be m square minus
4n² एंड 2 की मल्टीप्लाई हो रही है बाहर, तो अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 2m² माइनस 2 4 ज़ा 8n². ऑल राइट. Now let us take one more example. If there are 3 terms means x plus 2. अभी तक तो हमने 2 terms का ही करा था, एक माइनस का होता था, एक प्लस का होता था, means a plus b, a minus b. But if the terms are 3 means x plus 2, x minus 2 and here it is x square plus 4. तो यहाँ पे we will apply 2 times आइडेंटिटी, वी विल अप्लाई 2 times. एक बार तो इस क्वेश्चन में करेंगे एंड एक बार इसके अंदर वाले सॉल्यूशन में करेंगे. नाउ लेट अस सी, यहाँ पे x plus 2, x minus 2 आपको शो हो रहा है. डोंट सी दिस वन, ओके, फॉरगेट दिस, ओनली सी दीज 2. सो ये हमारा साइमल्टेनियसली इधर चलता रहेगा. x plus 2, x minus 2, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी हमारी सेम a plus b, a minus b की, तो इट विल बी x² माइनस 2². ये हमारा साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेगा. x² प्लस 4, सो x² माइनस 4 हो गया ये. आफ्टर सॉल्विंग द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी, x² माइनस 4 हो गया और यहाँ पे है x² प्लस 4. तो नाउ यू कैन कंपेयर. Again it has become the identity of a plus b and a minus b. Now again we have to apply the identity, that is a² minus b². So it will be x² का whole square minus 4 का square. So it will be x raised to the power 4 minus 4 का square 16. Okay, so have you understood how we have solved these 3 identities? Means 3 types of terms we have, and first we have applied identity in 2 terms, and then again we have applied, after doing again we have applied the identity again in 2 terms. All right, now we have the question of this type, that if we have given the question like this, means in values we have given and we have to use the identity a plus b, a minus b, then how we will apply this identity in this type, means multiply type of question. So can you see, here it is 34 and here it is 26. So we have to arrange these multiplication products, means these terms, in such a way so that it becomes in the form of a plus b and a minus b. So कैसे इसको अरेंज करेंगे, किस फॉर्म में, दिस वी हैव टू थिंक आवर सेल्फ ओनली. सो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 26 है. सो कैन यू इमेजिन व्हाट नंबर इज कॉमन इन दिस, 30. अगर 30 में हम 4 प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 34, एंड अगर 30 में 4 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 26. So we have make this identity like in this form, 30 plus 4 means ये a plus b हो गया, this is a and this is b, and 30 minus 4 तो ये again a हो गया, ये b हो गया. So have we make this identity in this form. Okay, now solve the identity in this way, means 30 का square minus 4 का square. So don't multiply 30 into 30, जस्ट मल्टीप्लाई 3 by 3, मीन्स 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 1 0 का स्क्वायर होगा तो 2 0 हो जाएंगे, तो इट विल बी 900. ओके, माइनस 4 4 ज़ा 16. देन आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट 880. ऑल राइट, सो विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन करे बिना वी हैव सॉल्व दिस आइडेंटिटी इन अ ईजी वे. नाउ इफ वी हैव क्वेश्चन लाइक in the form of decimal. So this is 14.7 into 15.3. So what number is common? Means ये 7 है, यहाँ 3 है. So अगर हम 15 में से माइनस कर देंगे 0.3 इसमें और इसमें प्लस कर लेंगे 0.3. So can we make this identity in the form of a plus b and a minus b? Yes, of course. So 15 minus 0.3 and 15 plus 0.3. So it will be 15 का whole square minus 0.3 का whole square. So 15 का square 225 and 0.3 का whole square 0.09. So after solving we got 224.9. Now let us see one last type of fraction, 6 whole 2 upon 3 in multiply 5 whole 1 upon 3. So we have to arrange these terms in such a way so that we can make the identity like a plus b and a minus b. So first we will make this into improper fraction. Okay, 20 upon 3 and 16 by 3. So what we will do,
अगर हम 6 में 2 + 2/3 प्लस करेंगे एंड 6 में 2/3 माइनस करेंगे, सो वी विल गॉट आवर आंसर इन दिस वे. अगर हम इसमें 6 + 2/3 करेंगे तो इट विल 20/3 एंड अगर 6 में 2/3 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 16/3. सो दिस यू हैव टू थिंक योर सेल्फ ओनली. अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. तो वॉट इट हैज बिकम a + b एंड a - b फॉर्म. सो 6 का स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर. So 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर 4/9. So after solving, taking the LCM, we got our answer 320/9. Now convert this into mixed fraction, that is 35 whole 5/9. So children, like this you have to do your exercise, and if you have any query you can ask me. We have covered all the types related to your exercise. Okay.